Yeah. So किस में डाउट था? 6 point 24 and 25 दोनों में। तो 6.24 में ठीक है, go into 6.24. Six point 24 में what do we have here? A radius, sorry, a ring of radius. A ring of radius 2 meter. Radius 2 meter translates in a plane with a constant velocity 5 meter per second. Translates मतलब moves. A uniform magnetic field 0.1 Tesla exits in a space in a direction perpendicular to the plane of the ring. Consider different parts of the diametrically opposite points on the ring. Between which pair of the points is the EMF maximum? What is the value of the maximum EMF? ठीक है. Diagram. Let me draw the diagram first. ठीक है. Now यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? Ring of radius. Between which pair of points is the EMF maximum? What is the value of maximum EMF? And उन्होंने ये भी बोला consider different pairs of diametrically opposite points. So if I take this point P, इसका diametrically opposite point मतलब ये Q. तो doubt क्या है इसमें? Here Y circular coil is replaced by a rod of length of 2R. It should be 2 rods of length 2R. Total circular coil के लिए अगर हमें चाहिए EMF, then it should be 2 rods. ठीक है? Total circular coil के लिए अगर हमें चाहिए तो 2 rods होना चाहिए. ठीक है? So if I need, but again हमें देखो, just have to find out यहाँ पे निकालना क्या है वहाँ पे? Within which 2 points will the EMF be maximum? वो निकालने और कुछ, right? So basically speaking, ये PQ ले लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाओ, कुछ EMF होगा. We need that potential difference, right? यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ या यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ, potential difference तो एक ही होगा. It's the difference between potential at Q and potential at P, right? So 2R ले लेना directly, क्या होगा? You're not taking the complete coil, you're taking only 2 points के ऊपर, 2 opposite points के बीच में EMF निकाल रहे हैं और कुछ. करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा? करंट तो कंटिन्यूअस होगा ना. इनफैक्ट इस केस में तो अच्छा, इस केस में टोटल कोई EMF इंड्यूस होगा? मुझे पहले ही बताओ. यहाँ पे द सर्कुलर कॉइल
is moving in a uniform magnetic field which is inverse. तो पहले just tell me this, यहाँ पे the EMF induced for the complete circular coil क्या होगा? EMF induced for the complete circular coil क्या होगा? How much will it be? यहाँ पे is the flux changing? मनोज ये डिस्कस कर लिया हमने. Whatever has been discussed, you cannot go wrong with that. यहाँ पे the flux is not changing because देखो the complete the loop is inside the magnetic field. Magnetic field passes to the complete loop. So कोई भी point पे flux क्या है? At any point of time, the flux is given by flux is equal to magnetic field into area. Radius constant, magnetic field का value भी constant, everything is constant. So flux does not change. So d phi जो है it will be equal to 0 और d phi by dt भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा. So the EMF induced for the complete circular coil will be 0. That's how it works, right? So पूरा circular coil के लिए तो 0. That's one thing. But हमें क्या चाहिए? We need एक मिनट. But हमें क्या चाहिए? यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा? Between which 2 points will the EMF induced be maximum? That's the question here. देखो और वाले हम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ से P से लेकर Q तक लिया, then if I take this rod, exactly speaking दो सेमी सर्कल से यहाँ पे, so 2 लेना पड़ेगा. I take 2 rods, ठीक है? 2 rods लेना होगा. When I take 2 rods here, यहाँ पे 2 rods. 2 rods में क्या होगा? EMF induced तो एक ही होगा. Yes. अगर P नेगेटिव हो गया तो Q पॉजिटिव होगा. Then the equivalent circuit कैसे होगा? Equivalent circuit will be in this way. दोनों में equal EMF induced होगा. अब बता दो अगर दोनों में equal EMF induced है और rod के लिए, तो total EMF induced क्या होगा इस सर्किट के लिए? दोनों अगर E हो गया, इस सर्किट के लिए total EMF induced क्या होगा? How much will it be? It will be 0. So you can take in terms of rod also, कोई दिक्कत नहीं है. You will get the same answer. But why are we not taking the 2 rods? हमें total circuit के लिए नहीं चाहिए. We do not need for the complete circular coil. We only need one value of EMF. मतलब बस एक ही चाहिए हमें. इतना ही चाहिए. ये कब maximum होगा? That's what we need. Yes. समझ आ रहा है ना? We need only this value. Question ये पूछा उन्होंने. Question is that. Question ये पूछा. Between which pair of points? देखो. Look at part 1. Between which pair of points is the EMF maximum? तो हमें 2 पॉइंट्स के बीच में वी आर नॉट गोइंग फॉर नेट, बस एक रॉड जैसे और कुछ नहीं. द वैल्यू, ठीक है? सो इसलिए वी नीड ओनली वन रॉड. वी आर ओनली टेकिंग वन रॉड, नॉट 2. मतलब एक ही सेमी सर्कल लेंगे, नॉट जस्ट 2 सेमी सर्कल्स. ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी राइट की तरफ कांस्टेंट. वी राइट की तरफ अगर मान लिया, लेफ्ट की तरफ भी मान लो, कैसे भी मान लो, वी कांस्टेंट है यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स. So all that will depend on what? Will depend on angle. So कब maximum होगा? When the rod is exactly perpendicular to velocity. अगर velocity right की तरफ हो गया तो, for this rod PQ, इसके लिए क्या हो जाएगा? V जो है towards right. For PQ it will be maximum. समझ आया अभी? Yes. And minimum मतलब velocity and the rod in the same direction, यानी यहाँ पे for the RS. And वो भी कितना होगा? Minimum, and that will be equal to 0. Clear? Yes. Then और किसमें डाउट है? Make it fast. Then और कौन से डाउट? 25th. 25th.
Look at question number 25 here. क्या दिया इन्होंने? Two rings of radii 5 meter and 10 meter move in opposite directions if velocity is 20 meter per second and 10 meter per second respectively. दे दिया उन्होंने. On a conducting surfaces, the surface is conducting. ठीक है? मतलब ये surface, this surface is conducting. बाकी सब values तो दे दिया उन्होंने. There is a uniform magnetic field of magnitude 0.1 Tesla perpendicular to the plane of the rings. वो भी diagram में दे दिया. Find the potential difference between the highest points of the two rings. ठीक है? अब देखो यहाँ पे let me go with these 2 points. Conducting surface बोला उन्होंने. So if this is point P, if this is point Q, P and Q के बीच में potential difference कितना होगा? How much will it be? P and Q में potential difference 0 होगा because they're connected by a conducting surface. तो potential difference क्या हो जाएगा? 0. Vp is equal to Vq. ठीक है ना? Now हमें let's suppose I'll take A and B. जो A के पास I need the potential. So क्या करूँगा मैं? I'll take a rod AP. Right? एक semicircle मान लेना. This semicircle is going towards left with speed 20 meter per second. So मतलब इस rod AP is going towards left with speed 20 meter per second. So AP में what will the induced EMF be? AP में induced EMF क्या होगा? AP में induced EMF, I'll call it as E1, will be equal to BV into 2R. BV is 0.1, V is 20, 2 times the radius. Radius is 5 meter, so 2 into 5, 10. So it will be equal to 2 into 10. I think it will be 20 volts. 2R है ना? It's diameter, right? 2R ही लेंगे ना? I need the potential difference between A and P. The same as the previous case. ठीक है? Clear? इसमें कोई doubt है? Now मुझे बता दो. Let's suppose I'll take A and P. I'll take Vp is equal to Vq is equal to 0 volt. मान लूँगा. ठीक है? Now if P is equal to 0 or P if the potential is 0, then A जो है it will be at negative potential or at positive potential. बस मुझे इतना बता दो. A and P में which is negative and which is positive? A and P में which is negative and which is positive? Magnetic field is inverse. Magnetic field is inverse. There is a positive charge moving towards left. Magnetic field is inverse, so force किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा. So P will become positive and A will become negative. ठीक है? इसका मतलब potential difference is the potential is lesser or lower at A. So अगर P के पास अगर हमने potential 0 लिया, A के पास potential क्या होगा? A के पास potential क्या होगा? Will be equal to Vp 0 लिया. That implies VA will be equal to minus 20 volt. Yes, कितना होगा? minus 20 volt. minus 20 या 10? 10 आएगा 20 आएगा? 20 कहाँ से आएगा? Just a minute. Rod PQ. Calculation सही क्या हमने? Calculation सही है यहाँ पे. The calculation is correct, right? 20 meter per second. B 0.1, 2 times the radius. छोटा radius मतलब 5. 2 into 5 is 10. ठीक है, सही है ऐसे. तो minus 20 volt. I think the calculation, ये जो calculation किया इन्होंने वो गलत है. ठीक है? Example में जो calculation है वो गलत है. So VA is equal to minus 20 volt. Then I'll take
the rod BQ. Rod BQ is going towards right. BQ के लिए क्या होगा? BQ is going towards right. With speed 10 meter per second. इसका जो radius है, it is given as 10 meters. So इसका जो EMF है, it will be equal to again BV into again the same 2 radius, 2 times R. V 0.1, V is 10 and 2 times the radius, radius is 10. तो यहाँ पे कितना मिलेगा? It should be equal to 20 again, right? Now between B and Q, which will be at the positive potential, higher potential पे क्या होगा? Which will be at the higher potential. यहाँ पे B positive पे होगा. Now VQ तो 0 मान लिया हमने, so VB कितना होगा? VB will be equal to 20 volts. VB will be equal to 20 volts. Yes. समझ आया ना अभी? Right. So potential difference between A and B, वो पूछा उन्होंने. Potential difference between the two highest points, मतलब A and B. So directly go for that. VA minus VB का magnitude अगर हमें चाहिए, is -20 minus 20, इसका magnitude मतलब कितना हो जाएगा? 40 volts. 20 दिया, it won't be 20, it will be 40. ठीक है? समझ आया ना सबको? Yes. Then और किसमें? If you don't take P and Q as 0, कुछ भी ले लेना, same ही मिलेगा. Even then you'll get the same, because वो subtract हो जाएगा ना, subtraction में VP and VQ cancel हो जाएंगे, तो तब भी same ही मिलेगा. Take it as 0 because, or for our convenience, it will become easier. ठीक है? Then और किसमें? 6.32. 32 कहाँ गया? 32 अभी के लिए do not go into 32. Electric field will go into that later on, not now. Electric field discuss नहीं किया हमने, right? We'll go into that, not now. Examples में और कोई doubt है? Until example कौन से example तक? Until example 6.30. Example 6.27. Look at example 6.27 here. क्या है? What do we have? A square metal loop wire of side 20 centimeter and resistance 2 ohms. Just hope कि उन्होंने side का resistance दिया. One side resistance is what? 2 ohms. Square है वहाँ पे, square metal wire. Is moved with constant velocity V0 in a uniform magnetic field. V is equal to 1 Weber per meter square as shown in the figure. The magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop here. The loop is connected to a network of resistance, each of wire 5 ohms. The resistance, each of value 5 ohms. The resistance of the lead wires VF and AF are negligible. VF and AE are negligible, neglected. What should be the speed of the loop so as to have a steady current of 2 milliampere in the loop? So current का value 2 milliampere होना चाहिए loop में. Given the direction of current, give the direction of current in the loop. Okay, so I think it's simple here. Find out EMF, find out total resistance, find the current. अब यहाँ पे एक मिनट, let me look at the doubts here. Here they have considered only one rod should be take two. We have to take only one rod. देखो, if I call this rod जैसे AP है ना, I'll go with this. This is PQ. Is RS. Is RS moving in the magnetic field? Is RS moving in the magnetic field? RS magnetic field में है कि RS is outside the magnetic field. RS is not moving in the magnetic field. PQ is moving in the magnetic field, not RS. Okay? So EMF is induced in PQ.
EMF is induced in PQ, not in RS. EMF induced in RS जो है it will be equal to 0. ठीक है, अब हो जाएगा. किसी को डाउट है? मनोज had a doubt, his doubt is cleared. बाकी सब किसी को डाउट है इसमें? You do not have a doubt, I'll skip this. Okay, it's a good question, right? Yeah. Then example 6.30. Example 6.30. इसमें क्या दिया उन्होंने? Two parallel rails with negligible resistance are 10 centimeter apart. Diagram में 10 centimeter दिखाया क्या उन्होंने? नहीं दिखाया, ठीक है. They are connected by a 5 ohm resistor. This is a 5 ohm resistor. The circuit also contains two metal rods having resistance of 10 ohm and 15 ohm along the rails. दोनों का resistance अलग है, 10 ohm and 15 ohms. The rods are pulled away from the resistor at constant speeds 4 meter per second and 2 meter per second respectively. दे दिया. A uniform magnetic field of 0.01 Tesla, uniform one, is applied perpendicular to the plane of the rails. मतलब the general case angle से कोई मतलब नहीं होगा. Determine the current in the 5 ohm resistor. Now basically what we can do is we can consider that यहाँ पे the rod AB, look at the rod AB. The rod AB is going towards left. So rod AB can be replaced with an EMF. Right? Similarly, rod EF is also going towards right. उसको भी एक EMF से replace कर सकता हूँ मैं. So how will that diagram be then in that case? मतलब diagram it's a analogy के लिए. अब देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को चेंज करना पड़ेगा, बट अभी के लिए ऐसे ही होगा. यहाँ पे एक सेल आएगा, यहाँ पे दूसरा सेल आएगा. नाउ पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है क्या नीचे है क्या, विल हैव टू वेरीफाई दैट. बट ये समझ में आ रहा है ना, AB can be replaced with E1 and EF can be replaced with E2. Yes, ये समझ में आया? If this diagram is clear, then हो जाएगा. Yes or no? किसका डाउट है? प्रशांत. Terminals will be opposite, correct? हाँ वो भी सही है. Terminals will be opposite, that we'll have to verify. We'll verify. ठीक है? So rod AB is going towards left. Rod AB is going towards left. So which end will be positive, A or B? Magnetic field is inwards. So which terminal will be positive, A or B? B will be positive, A will be negative. तो यहाँ पे चेंज करना होगा मुझे. And EF में क्या होगा? EF में E will be positive. ठीक है, अब डायग्राम सही हो जाएगा. अब डायग्राम चेंज किया मैंने, डायग्राम सही होगा. अब E1 कितना होगा? E1 will be equal to what? BLB. लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया उन्होंने, राइट? 10 सेंटीमीटर दिया ना, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, राइट? एंड यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर लेना. E1 तो है यहाँ पे, E1 के साथ साथ एक रेजिस्टेंस. ठीक है, सिमिलरली E2 के साथ साथ भी एक रेजिस्टेंस. दिस इज 10 एंड दिस इज 15. एक मिनट. One is 10 ohm, the other is 15 ohm. So this is 10 ohms. ये 15 ohms. ठीक है, this E1. अब E1 का वैल्यू कितना होगा? E1 का वैल्यू फॉर्मूला डायरेक्टली मिलेगा. कौन सा? BLB. That E1 is equal to BLB.
बी उन्होंने दे दिया होगा, बी 0.01, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर एंड बी इज 4. तो ये कितना मिलेगा हमें? हाउ मच विल वी गेट दैट? 0.004 वोल्ट. यस. एंड सिमिलरली E2 भी मिलेगा हमें. E2 भी कितना मिलेगा? अगेन द सेम फॉर्मूला, B L V, B 0.01, L is 0.1 and V is 2. तो यहाँ पे 0.002 मिलेगा. ठीक है. अब इसमें इसके बाद क्या करोगे? इसमें करंट I1 मान लो लेफ्ट लूप में, राइट लूप में करंट I2 मान लो. राइट, कर सकते हैं ना इसके बाद. After this you can go for what? After this you can go for Kirchhoff's loop law. Now will you be able to do? हो जाएगा ना अभी? Kirchhoff's loop law. यहाँ पे unknowns क्या क्या है? We have two unknowns, I1 and I2. प्रशांत simple case है. This is simple case. Look at the loop A, B, C, F. Look at A, B, C, F and बीच में 5 ohm resistance. Look at A, B, C, F. For loop A, B, C, F, Kirchhoff's loop law क्या होगा? A, B, C, F के लिए loop law will be what? यहाँ पे E1 जो है we got it as 0.004 माइनस 5 ओम रेजिस्टर में करंट कैसे होगा? ऊपर की तरफ मान लिया तो I1 माइनस I2 होगा ना, बिकॉज I1 इज अपवर्ड्स एंड I2 इज डाउनवर्ड्स. राइट, I1 is upwards and I2 is downwards, so current कितना होगा? I1 minus I2. 0.004 minus then I1 minus I2 into 5 minus 10 into I1 is equal to 0. ये ABCF के लिए होगा. Then और कौन सा लूप यहाँ पे? CDEF. उसके लिए अगेन किरचॉफ्स लूप लॉ वापस लगाएंगे तो क्या होगा? 0.002 minus 15 I2 plus I1 minus I2 into 5 is equal to 0. दो अननोन से I1 and I2, दो इक्वेशन है हमारे पास. Can solve and you'll get I1 and I2. And current through 5 ohm resistance is I1 minus I2. हो जाएगा अभी? Can be done, right? Yes. मनोज ने कुछ पूछा. We cannot apply Kirchhoff's loop law. Once we get the EMF मिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा. Once we find the EMF, after that we can go with the normal current equations, the Kirchhoff's loop law. For finding EMF, for finding the induced EMF, for that part you cannot apply the Kirchhoff's loop law. But एक बार EMF मिल गया तो उसके बाद you can apply. ठीक है? Clear? Just a minute, then let me take the attendance. ठीक है? Clear? Yeah. Okay, then we'll continue next class. Time बहुत ज़्यादा हो गया. Okay. So 6.1 and 6.2 is done, right? So module कर लेना. Module का 0.1 कर लो. There are good questions in that. ठीक है? Module का 0.1. ठीक है? Get it done. Clear? Okay then. I'll end the class. I'll unlock the test now. Test अभी unlock हो जाएगा. You can give it today or tomorrow. ठीक है? Okay then. Bye everyone.